अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से मैक्रो इकोनॉमिक्स के 26 लेक्चर में हो रही है। इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर शुरू करूं, मैं ये चाहूँगी कि हमने जो पिछला लेक्चर डिलीवर किया था उस पर थोड़ी सी रिव्यू कर ली जाए। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी द मॉडल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, कि किस तरह ये मॉडल हमें एक्सप्लेन करने में मदद देता है कि हमारी इकोनॉमी में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं उनको हम किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और फिर हमने ये कहा था कि वंस वी अंडरस्टैंड द फ्लक्चुएशंस विद द हेल्प ऑफ द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल, तो किस तरह गवर्नमेंट जो है वो स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज जो है ऑन द बेसिस ऑफ दैट मॉडल कैन ऑप्ट फॉर दैट। उसमें हमने बात की थी कि जब हम एग्रीगेट डिमांड के मॉडल की बात करते हैं तो फॉर अ गिवन लेवल ऑफ मनी सप्लाई, यानी हमने एक जो है बहुत सिंपल सा मॉडल लिया था विच वॉज बेस्ड ऑन द क्वांटिटी इक्वेशन, और उसमें हमने कहा क्वांटिटी इक्वेशन इज mv इज इक्वल टू py। और इसमें हमने ये बात की कि अगर मनी सप्लाई हमारे पास कांस्टेंट है और वेलोसिटी ऑफ मनी इज आल्सो डिटरमिन्ड फ्रॉम आउटसाइड द मॉडल एंड इज ऑन एवरेज कांस्टेंट ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर हमारे पास mv इज इक्वल टू py में अगर mb कांस्टेंट है और vb एक्सोजेनसली गिवन n कांस्टेंट है, तो हमारे पास p और y में इनवर्स रिलेशनशिप है कि अगर हमारा प्राइस लेवल बढ़ता है तो नॉमिनल इनकम कम हो जाती है और अगर प्राइस लेवल कम होता है तो नॉमिनल इनकम बढ़ जाती है। फॉर एनी गिवन लेवल ऑफ मनी सप्लाई एंड कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर हम एग्रीगेट डिमांड कर्व को ड्रा करें तो अगर हम ले एक्स एक्सिस पे नॉमिनल इनकम y को और y एक्सिस पे प्राइस लेवल p को, तो देन हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व विल बी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। और उसमें हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास देयर इज एन एक्सोजेनस चेंज एंड दैट एक्सोजेनस चेंज वी अज्यूम कि लेट्स सपोज कि वो चेंज इज इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, तो इंक्रीज इन द मनी सप्लाई से क्या होगा कि हमारा कर्व जो है दैट विल शिफ्ट आउटवर्ड, शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, और जिसकी वजह से हमारे पास जो है एक एग्रीगेट डिमांड में शिफ्ट, और उसको जब हम रिलेट करते हैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व के साथ, देन वी कैन लुक एट द इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। तो जब हमने सप्लाई साइड को एनालाइज किया तो वी सेड कि सप्लाई साइड में हमारे पास शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व एंड द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई जो है दीज वर टू डिफरेंट थिंग्स। और उसमें हमने ये कहा था कि शॉर्ट रन में हमारे पास क्योंकि प्राइसेस आर स्टिकी, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल, प्री डिटरमिन्ड प्राइस लेवल अगर ले लें हम, तो उस प्राइस लेवल के ऊपर हमारे पास जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व आएगा दैट विल बी हॉरिजॉन्टल। उस हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व के ऊपर जो प्राइस लेवल गिवन है, हमारा जो सप्लायर है उसने ये डिटरमिन करना है कि कितनी आउटपुट जो है वो पैदा करे एंड ऑफर करे फॉर सेल टू द जनरल पब्लिक। और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट विल बी डिटरमिन्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। उसके बाद हमने बात की कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमारा क्या है, एंड वी सेड लॉन्ग रन में हमारी प्राइसेस आर फ्लेक्सिबल, वी हैव सफिशिएंट टाइम पीरियड कि हमारे पास जो भी चेंज आती है उसमें हमारी इकोनॉमी जो है वो एडजस्ट करने के बाद दैट गोज टू दी चेंजेस इन दी प्राइस लेवल। और उसमें हमने जब लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात की तो बेसिकली वी वर फोकसिंग ऑन दी क्लासिकल थ्योरी, और क्लासिकल थ्योरी में जैसे हमने ये कहा कि जब भी मनी सप्लाई हमारी चेंज होती है तो दैट इफेक्ट्स ओनली दी रियल द नॉमिनल वेरिएबल्स नॉट दी रियल वेरिएबल्स, जिसको हमने पिछले चंद एक लेक्चर्स में क्लासिकल डाइकोटमी की बात की थी कि हमारे पास रियल वेरिएबल्स आर डिफरेंट फ्रॉम दी नॉमिनल वेरिएबल्स, एनी चेंज इन द नॉमिनल मनी सप्लाई will only influence the nominal variables of the prices and the output. इस बैकग्राउंड के साथ हमने पिछले लेक्चर में शॉक्स की बात की। शॉक को हमने ये कहा कि some exogenous change which is not determined from within the model। तो इस एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल में जब हम शॉक्स की बात करते हैं तो उसमें भी हमने कहा कि there are two categories of the shock। एक है हमारे पास डिमांड साइड शॉक्स और दूसरे हैं हमारे पास सप्लाई साइड शॉक्स। तो डिमांड साइड शॉक्स में हमने ये कहा था कि सपोज द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स, जिसकी वजह से वेलोसिटी ऑफ मनी जो है दैट हैज इंक्रीज, उसकी वजह से हमने ये देखा कि जब वेलोसिटी ऑफ मनी बढ़ गई तो उसके साथ साथ हमारी जो है एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो भी शिफ्ट कर गया।
and the influence was seen on the price level as well as the income level. इसके साथ जब हमने बात की कि role of the government, कि fluctuation जो है that has taken place because of an external shock, तो उसमें what is the role of the government? गवर्नमेंट जो है वो किस तरह इस फ्लक्चुएशन को स्टेबलाइज कर सकती है, तो दैट वाज विद द हेल्प ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, कि अब गवर्नमेंट जो है वो एडजस्ट कर दे अपनी मनी सप्लाई को, देन वी गो बैक टू द फुल इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड द ओल्ड प्राइस लेवल. दूसरी तरफ हमने ये भी देखा था कि वेलोसिटी एक तरफ बढ़ती है तो दूसरी तरफ कम होने से एग्जैक्टली जो है हमारे पास रिवर्स जो है वो उसका इन्फ्लुएंस था. देन वी मूव टुवर्ड्स द सप्लाई साइड शॉक. तो सप्लाई साइड शॉक में हमने कहा कि एनी शॉक विच रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट एज वेल एज द प्राइस लेवल, इसीलिए इन सप्लाई शॉक्स को हम प्राइस शॉक्स भी कहते हैं. तो उसमें हमने ये कहा कि अगर सपोज कि हमारे पास कोई नेचुरल डिजास्टर आने की वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, बिकॉज रॉ मटेरियल जो है उनकी आउटपुट कम हुई और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, दैट इज वन रीजन. फिर उसमें हमने ये बात की कि सपोज कि हमारे पास एक और कैटेगरी ऑफ द सप्लाई शॉक है जिसमें गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन, फॉर एग्जांपल पोल्यूशन कंट्रोल, कि अगर गवर्नमेंट टैक्स करती है फॉर एमिशन ऑफ द पोल्यूशन तो वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है फॉर दैट पर्टिकुलर फॉर्म बढ़ा देती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो शॉर्ट रन में हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा by showing a decrease in the output level. फिर हमने बात की another variable and that was the union, कि union pressure की वजह से अगर हम wages जो हैं high pay करते हैं तो again that results in the higher cost of production and therefore the higher prices. And finally we also talked about the supply side shocks in the real life and then we took the example of the oil price shocks. तो इस सारे सिनेरियो में जब भी हमारे पास कोई सप्लाई साइड शॉक या प्राइस शॉक आता है तो उसकी वजह से हमारा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट करता है. एडवर्स शॉक की वजह से हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट करता है टुवर्ड्स लेफ्ट और उसकी वजह से हमारी प्राइस लेवल भी बढ़ जाती है और आउटपुट लेवल कम हो जाता है. अब अगर रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज कि जब ऐसा सिनेरियो हो तो उसको एडजस्ट करे विद द मॉनेटरी पॉलिसी, और उस सूरत हाल में जब स्टेबलाइजेशन पॉलिसी गवर्नमेंट अंडरटेक करती है तो दैट कैन न्यूट्रलाइज टू सम एक्सटेंट द इफेक्ट ऑफ द सप्लाई शॉक. जब हम रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं तो उसमें हमने ये कहा कि हमारे पास ऑयल प्राइस शॉक जो है वन गुड एग्जांपल, जिसमें ओपेक कार्टेल ने अर्ली 70s में ऑयल प्राइसेस बढ़ा दी continuously 73, 74 and 75. Highest peak was 68% in the year 1974. जिसकी वजह से most of the economies में क्या हुआ कि supply side shock आया, prices they increased and the unemployment level भी बढ़ गया और हमारे पास inflation भी बढ़ गई. जब economy slowly and gradually adjust होने लगी, they were moving towards the full equilibrium employment level. Through the adjustment in the price level, then there was another shock in late 70s. और उस shock की वजह से again economies they went through another phase of increase in inflation and the increase in unemployment. Then finally a positive supply side shock by a decrease or decline in the oil prices in the early 80s. और उसकी वजह से we saw कि हमारा inflation rate भी कम हो गए and unemployment rate भी कम हो गया. तो इस रियल लाइफ एग्जाम्पल को देखते हुए एंड द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल को देखते हुए वी केम टू द कंक्लूजन कि हमारे ये सप्लाई मॉडल जो है एग्रीगेट सप्लाई एंड डिमांड मॉडल, दे आर इन अ पोजीशन टू एक्सप्लेन द रियल लाइफ फिनोमेना एंड द गवर्नमेंट कैन मूव फॉरवर्ड टू स्टेबलाइज दीज शॉक्स टू सर्टेन लेवल. लेकिन जो भी शॉक्स आते हैं दे आर शॉर्ट रन फिनोमेना. इन द लॉन्ग रन इकोनॉमी जो है दैट कैन मूव टुवर्ड्स द फुल इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो ये तो था हमारा बेसिकली पिछला लेक्चर, लेकिन इसके साथ ही आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने एक और फिनोमेना, एक और थ्योरी विच इज नोन एज द केन्सियन थ्योरी एंड द केन्सियन मॉडल, उसके बारे में भी बात करनी शुरू की. उसका इंट्रो जो है हमने थोड़ा सा किया था, जिसमें यह बैकग्राउंड में फिनोमेना ये था
کہ ڈیورنگ دی گریٹ ڈپریشن economies they went through the shocks, they were going through the higher level of unemployment, لیکن they were not able to come out of that phenomena. جیسے ابھی ہمارا aggregate demand and aggregate supply میں ہم نے کہا کہ supply side shock آئے گا, تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے economies after some times they will start moving towards the full employment, long run equilibrium level of prices and the employment output level. لیکن جب گریٹ ڈپریشن میں یہ فینومینا نہیں آیا, دین دی اکانومسٹ دے اسٹارٹڈ تھنکنگ آف دی ریزن بیہائنڈ اٹ. تو اس میں جو ہے ان دی ایئر 1936 جان مینارڈ کینز ہی کیم اپ ود ہز تھیوری اینڈ ہی سیڈ کہ صرف سپلائی سائڈ شاکس جو ہیں وہی ریسپانسبل نہیں ہے فار دی لو پرفارمنس آف دی اکانومیز. اس میں ہمارے پاس ڈیمانڈ سائڈ از اندر فیکٹر وچ وی شوڈ کنسیڈر. ان کا ایگریگیٹ ڈیمانڈ اگر ہمارے پاس لو لیول میں ہو تو دین اگین اکانومیز میں ناٹ بی ایبل ٹو کم آؤٹ آف دیٹ پرٹیکولر ریسیشن. تو ہمیں جو ہے ایگریگیٹ سپلائی کے ساتھ ساتھ ایگریگیٹ ڈیمانڈ سائڈ کو بھی کور کرنا چاہیے اور اس کو بھی ڈیٹیل میں انالائز کرنا چاہیے. تو اپنے اس ماڈل کو ایکسپلین کرنے کے لیے کینز بیسیکلی بیس کرتا ہے اپنی تھیوری آن دی گڈس مارکیٹ اکولیبریم اینڈ دی منی مارکیٹ اکولیبریم. اور گڈس مارکیٹ کے اکولیبریم کو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے ود دی انویسٹمنٹ سیونگ کرو, جس کو ہم کہتے ہیں آئی ایس کرو. اور دوسری طرف منی مارکیٹ کے اکولیبریم کو ریپرزینٹ کرتا ہے ود دی ایل ایم کرو وچ از دی لیکوڈیٹی منی کرو. تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ آور ٹوڈیز لیکچر, جس میں ہم جو ہے کینزین ماڈل کو دیکھیں گے اور اس میں یہ دیکھیں گے کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کے کیا کیا کمپوننٹس ہیں, اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ہمارا کینزین کراس جو ہے وہ کیا ہے. دیٹ از دی بیک گراؤنڈ فار دی کینز ماڈل. کینزین کراس کے بعد وی آر گوئنگ ٹو لک ایٹ دی گرافس, جس میں جو ہے ہم دیکھیں گے فائنلی کہ ہمارے پاس پلانڈ ایکسپینڈیچرز اینڈ ایکچوئل ایکسپینڈیچر جو ہیں دے گیو اس دی ایکولیبریم لیول آف آؤٹ پٹ. اینڈ اس کے بعد جو ہے افیکٹ ایگزوجینس چینجز کا افیکٹ دیکھیں گے, فزیکل پالیسی کا افیکٹ, مانیٹری پالیسی کا افیکٹ, اینڈ فائنلی ہماری اکانومیز جو ہیں وہ کس طرح ایڈجسٹ کرتی ہیں فار دیز چینجز ان آر پرٹیکولر ایگزوجینس شاکس. تو ہم شروع کرتے ہیں اپنی ڈسکشن ود دی کینزین تھیوری آف انکم اینڈ امپلائمنٹ. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ بیک گراؤنڈ میں ہمارے پاس وہی ہے کہ ہی از آلسو فوکسنگ آن دی ایگریگیٹ ڈیمانڈ. جیسے دی کلاسیکل ماڈل وچ بلیوز موسٹلی آن دی سپلائی سائڈ, اور دس سے کہ ہمارے پاس سپلائی سائڈ شاکس جو ہیں ٹیمپریریلی اکانومی کو ہائی پرائس لیول اینڈ لو لیول آف آؤٹ پٹ پہ لے جاتے ہیں, لیکن اکانومی جو ہے فلیکسیبل پرائسز کی وجہ سے ایڈجسٹ کرتی ہے بیک انٹو دی فل ایکولیبریم لیول آف آؤٹ پٹ ان دا لانگ رن. اور جب ہم فل ایکولیبریم لیول آف آؤٹ پٹ کی بات کرتے ہیں تو دیٹ بیسیکلی از دی لیول آف آؤٹ پٹ ویئر دی انمپلائمنٹ از اکول ٹو دی نیچرل ریٹ آف انمپلائمنٹ. تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ جب ہم لانگ رن کو دیکھتے ہیں تو لانگ رن میں ہمارے پاس کیا سینیریو ہے. لانگ رن میں ہم بات کر رہے ہیں کہ پرائسز آر فلیکسیبل اور ہماری اکانومی جو ہے وہ فل امپلائمنٹ لیول آف آؤٹ پٹ پہ آپریٹ کر رہی ہے. جب ہم شارٹ رن کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پرائسز آر ناٹ فلیکسیبل, دے آر اسٹیکی, دیئرفور اکانومی کین موو اوے فرام دی فل امپلائمنٹ لیول آف آؤٹ پٹ. اگر اکانومی جو ہے فل امپلائمنٹ لیول آف آؤٹ پٹ سے زیادہ پروڈیوس کر رہی ہے آؤٹ پٹ, دین واٹ ول ہیپن کہ انکریز ان پرائسز ول برنگ اٹ بیک ٹو دی فل امپلائمنٹ لیول آف آؤٹ پٹ. دوسرے سینیریو میں اگر اکانومی آپریٹ کر رہی ہے ایٹ این آؤٹ پٹ لیول وچ از بلو دی لیول آف فل امپلائمنٹ, تو دین ڈیکریز ان پرائسز ول برنگ اٹ بیک ٹو دی فل امپلائمنٹ لیول آف آؤٹ پٹ. تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ جبکہ ہم کینز کی تھیوری کو اینالائز کرنا چاہ رہے ہیں وچ از فوکسنگ آن دی ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو ود دی ہیلپ آف دی آئی ایس کرو وچ از دی equilibrium in the goods and services market and the LM curve which represents the equilibrium in the money market. تو ہم شروع کرتے ہیں اپنا کینز کا ماڈل with the Keynesian cross. اب اس میں what is the context, what is the background here? We are going to develop the IS and the LM model, the theory that yields the aggregate demand curve. We focus on the short run and assume that the price level is fixed. یعنی کہ جب ہم نے ایگریگیٹ ڈیمانڈ ایگریگیٹ سپلائی کی بات کی تھی اور اس ماڈل کی بات کی تھی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو ڈاؤنورڈ سلوپنگ ہے
for a given level of money supply. لیکن اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو ڈٹرمن کرنے کے پیچھے کون کون سے فیکٹرز جو ہیں وہ کار فرما ہیں, اور ان فیکٹرز میں ہمارے پاس آئی ایس اینڈ دی ایل ایم آر ٹو میجر کمپوننٹس, اور ساتھ ہم یہ بھی ازیوم کرتے ہیں کہ شارٹ رن ہمارا فوکس ہے, اور شارٹ رن کے اندر ہماری پرائسز جو ہیں دے آر اسٹیکی. فردرمور کہ جب ہم کینز کی بات کرتے ہیں تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے سمپل کلوزڈ اکانومی ماڈل in which income is determined by expenditure. When we are talking about the expenditure, we define certain variables. The first variable is I, which is planned investment. And then our planned expenditure, it has three components, C plus I plus G, where C is the consumption, I is the planned investment, and G is the government expenditure. Y is our real GDP, and that is the actual expenditure. Now, the difference between the actual expenditure and the planned expenditure is reflected in the change in inventories. Or the change in inventory is the mechanism which brings the economy back into the equilibrium. ہمارے پاس equilibrium condition کیا ہے؟ equilibrium condition وہ ہے کہ جب ہمارے پاس actual expenditure is equal to the planned expenditure. اور planned expenditure میں بھی ہم نے یہ کہا کہ I, which is the investment, is taken as the planned investment. So let's look on the further detail of the background of the Keynesian model. So what are the elements of the Keynesian cross? We have a consumption function. جیسے کہ ہم نے یہ کہا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ planned expenditures should be equal to the actual expenditure in equilibrium. Planned expenditure کو ہم نے ابھی پچھلی ہی سلائیڈ میں ڈیفائن کیا کہ that is equal to planned expenditure, E is equal to C, consumption is the first component, and then I is the planned investment, which is the second component, and the third component is G. And here, by the way, we have assumed that we do not have any imports and exports. Our economy is a closed economy. So in this closed economy model, اگر ہم one by one ان سارے component of the aggregate expenditure کو define کریں تو very first component is that of the consumption. تو کنزمپشن کو جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے ماڈلز میں بھی ہم نے کہا تھا کہ کنزمپشن از اے فنکشن آف ڈسپوزیبل انکم. سی از اکول ٹو سی آف وائی مائنس ٹی. وائی از دی انکم مائنس ٹی از دی ٹیکسز. دین وی ہیو دی گورنمنٹ پالیسی ویریبلس. ون از دی گورنمنٹ ایکسپینڈیچر اینڈ دی ادر از گورنمنٹ ٹیکسز. اینڈ وی ایزیوم ہیئر کہ گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر از ایٹ اے کانسٹنٹ لیول جی بار اینڈ ٹی government taxes is also at a level of T bar. For now, our investment is exogenous, which is I is equal to I bar. Total planned expenditure is equal to, E is equal to, first component is consumption, C of Y minus T bar, plus I bar plus G bar. And what basically is our equilibrium condition? The equilibrium condition is where Y is equal to capital letter E, where actual expenditure is equal to the planned expenditure. Our capital letter Y جو ہے that reflects our actual expenditure, and the capital letter E جو ہے that reflects the planned expenditure. Abhi for simplicity, what we have done here is in the Keynesian cross, we are saying that there are three components of our aggregate expenditure. The first component is the consumption. Consumption is a function of the disposable income. ڈسپوزیبل انکم میں ہمارے پاس جو ٹی ہے ٹیکسز دیٹ از فکس ایٹ دی ٹی بار. آئی کو بھی ہم کہتے ہیں انویسٹمنٹ از فکس ایٹ آئی بار. اور اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں جی کی وچ از اندر اکنامک پالیسی ویریبلس تو ہم کہتے ہیں کہ جی از آلسو اکول ٹو جی بار. سو ود دس بیک گراؤنڈ ہیئر لیٹس لک ایٹ دی planned expenditure function. So when we plan the expenditure and we try to graph the expenditure on this particular graph here, we are taking the income and the output on the x-axis, and we are taking the planned expenditure on the y-axis. As before, we have E is equal to C plus I plus G. Now, one thing we should notice کہ ہمارا planned expenditure curve is starting from the y-axis. کہ y-axis پہ اگر ہم نیچے جا کے دیکھیں کہ اگر ہماری انکم زیرو بھی ہو تو still we have the expenditure which is positive. Why is that so?
کہ ہمارے پاس کچھ کنزمپشن نیڈس ایسی ہوتی ہیں which are not dependent totally on our income, ہماری بیسک نیسیسٹی فار سروائیول. whether we are earning or we are not earning, دونوں ہی صورتحال میں ہمیں وہ نیسیسٹیز جو ہیں وہ پوری کرنی ہوتی ہیں. تو اس صورتحال میں ہم کیا کریں گے کہ وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دی ڈس سیونگ. یعنی پچھلے لیکچرز میں جب ہم نے بات کی تھی تو دیئر وی ٹاکڈ اباؤٹ دی سیونگس اینڈ دی ڈس سیونگس، کہ اگر ہمارا ٹوٹل انکم جو ہے اس کے دو کمپوننٹس ہیں، ایک ہے کنزمپشن اور دوسرا ہے سیونگ. تو اگر ہماری انکم جو ہے پازیٹیو ہے، اس کا کچھ پورشن ہم کنزیوم کریں گے اور کچھ سیو کر لیں گے. لیکن اگر ہماری انکم زیرو ہے تو اسٹل آر کنزمپشن ول بی پازیٹیو، دیٹ از فار دی نیسیسٹیز. اس لیے ہمارا جو ایگریگیٹ ایکسپینڈیچر کرو ہے دیٹ از اسٹارٹنگ فرام دی وائی ایکسس ود سم پازیٹیو کنزمپشن ایکسپینڈیچر. اینڈ دین کمز دی سلوپ آف دی کرو. اب اس کرو میں when we are saying the aggregate expenditure, we have three components, C plus I plus G. لیکن for simplicity here, we have assumed کہ G is equal to G bar, that is constant, and I is equal to I bar. Investment is also taken at a level I bar. Therefore, there is only one variable which is now changing, and that is the consumption. So what we see here is, along this particular line here, whenever the income changes, the result is a change in our consumption for the fixed level of G bar and I which is at the I bar. Therefore, the slope of this particular curve is the marginal propensity to consume. Okay, with these assumptions here, the slope of our planned expenditure curve reflects the marginal propensity to consume. What does it mean? It means کہ ہمارے پاس اگر 1 additional rupee of income آ جائے تو اس کا ہم کتنا پورشن جو ہے وہ کنزیوم کریں گے اور کتنا جو ہے ہم بعد میں سیو کر لیں گے. یعنی سیونگ ریٹ جو ہوگا دیٹ ول بی 1 مائنس دی MPC. مارجنل پروپنسٹی ٹو کنزیوم اب اکاؤنٹ فار کر لیں، 1 مائنس دیٹ ول گیوز اس دی سیونگ ریٹ. اس لیے اس کا جو سلوپ ہے دیٹ از دی مارجنل پروپنسٹی ٹو کنزیوم، کہ جو ایک ایڈیشنل روپی آف انکم ہوگا اس میں سے لوگ جو ہیں کتنے کنزیوم کریں گے. That is the marginal propensity to consume. اب ہم دیکھتے ہیں اسی گراف میں جب ہم لے رہے ہیں Y which is the income and output on the X axis and then the planned expenditure on the Y axis. The equilibrium condition. Equilibrium condition میں ہم نے یہ کہا تھا کہ where our planned expenditure is equal to the income, where capital letter E is equal to Y. Planned expenditure is equal to the actual expenditure. So this 45-degree line here gives us the equilibrium. اس equilibrium میں ہمارے پاس جتنی expenditure ہے that is exactly equal to the income. پہلے ہم نے دیکھا planned expenditure کا curve، پھر ہم نے دیکھا equilibrium condition. دونوں کو جب ہم آپس میں ملا دیں تو then we talk about the equilibrium condition in the economy. What we have here is a 45-degree line. Now this 45-degree line represents the equilibrium scenario where capital letter E which is the planned expenditure is equal to Y which is the actual expenditure. Whereas the other line which is of the planned expenditure and the slope of that line is the marginal propensity to consume. So we have planned expenditure E is equal to C plus I plus G. So the equilibrium level of income is where our actual expenditure is equal to the planned expenditure, and that we have reflected on this slide with the broken line where both are equal and our planned expenditure curve is intersecting our equilibrium or the 45-degree line. So this is the equilibrium condition in the Keynesian model. اب ہم دیکھنا چاہیں گے a change, an exogenous change. اور وہ چینج ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ سپوز دیٹ چینج از کمنگ فرام دی گورنمنٹ، اور گورنمنٹ میں بھی ہم فسکل پالیسی کو دیکھ رہے ہیں، فسکل میئرز کی بات کر رہے ہیں، اور اس میں ہم ایزیوم کر رہے ہیں پہلے ابھی تک ہم نے یہ ایزیوم کیا تھا کہ ہمارا G از اکول ٹو G بار. Now suppose there is an increase in the G which is the government expenditure. Then what will happen? کہ جیسا پہلے ہم نے ڈرا کیا تھا we have taken the actual expenditure or the income on the Y axis and the planned expenditure on the actual expenditure and income on the X axis and the planned expenditure on the Y axis. The equilibrium is the 45-degree line.
our old planned expenditure is without the change in G is E is equal to C plus I plus G1. Now there is increase in G and G2 is greater than G1. Therefore G2 बढ़ने से हमारा कर्व जो है planned expenditure का पैरेलल शिफ्ट किया अपवर्ड, और उस पैरेलल शिफ्ट में अपवर्ड जो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कर्व्स, प्लान एक्सपेंडिचर कर्व्स, विच इज C plus I plus G1 and C plus I plus G2, दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू द चेंज इन G, अ पैरेलल शिफ्ट. सो विद दिस चेंज इन G व्हाट हैपेंस हियर कि G के चेंज होने के साथ हमारे पास इक्विलिब्रियम लेवल हैज बीन शिफ्टेड आउटवर्ड. हमारी इनकम जो है, चेंज इन Y जो है वो बढ़ गई. अब क्या होगा कि इसकी वजह से जो हमारे पास इक्विलिब्रियम है, जो मैकेनिज्म है, दैट इज थ्रू द चेंज इन द इन्वेंटरीज. अब चेंज इन G की वजह से देयर विल बी एन अनप्लान्ड चेंज इन इन्वेंटरीज, कि बिजनेस की जो इन्वेंटरीज हैं दे आर द इक्विलिब्रियम ब्रिंगिंग फोर्स, कि हमारी इक्विलिब्रियम जो है दैट विल कम थ्रू द चेंजेस इन द प्लान्ड इन्वेंटरी पाइलअप्स बाय द बिजनेसेस. तो जब हमारी G चेंज हुई विच इज एन इंक्रीज इन चेंज G, इसकी वजह से हमारी बहुत सी बिजनेसेस जो हैं उनकी इन्वेंट्री में एक अनप्लान्ड ड्रॉप हो जाएगा. उनकी इन्वेंट्री कम हो जाएगी क्योंकि फौरी तौर पे जब एक्सपेंडिचर बढ़ा तो उसको रिस्पॉन्ड किया बिजनेसेस है बाय ऑफरिंग ऑल द इन्वेंट्रीज दे हैव. देयरफॉर इन्वेंट्रीज को मेकअप करने के लिए दे वुड लाइक टू मेक मोर इन्वेस्टमेंट्स, और इसीलिए दे आर गोइंग टू इंक्रीज देयर आउटपुट एंड इनकम विल इंक्रीज फ्रॉम द ओल्ड इक्विलिब्रियम Y1 टू द न्यू इक्विलिब्रियम Y2. अब इस न्यू इक्विलिब्रियम पे जब हम देखते हैं तो हमारे पास जो चेंज इन G, जो शिफ्ट है दो कर्व्स के दरमियान, दैट डिस्टेंस इज स्मॉलर, लेकिन इंक्रीज इन Y जो है दैट इज मोर. So what is the mechanism behind this? उसके पीछे जो mechanism है, that mechanism is known as the government purchases multiplier. जब multiplier की बात है तो what basically is our multiplier? कि हमने ये देखा कि previous graph में ही कि हमारा planned expenditure G के बढ़ने से, गवर्नमेंट की expenditure के बढ़ने से जो shift आया था that was smaller, लेकिन as a result जो हमारा equilibrium level of output था वो Y1 से जब Y2 पे आया तो दैट डिफरेंस वाज लार्जर. तो ये हमारा गवर्नमेंट परचेजेस मल्टीप्लायर जो है इसी लार्जर डिफरेंस को एक्सप्लेन करता है. लेकिन इसके पीछे जो मैकेनिज्म है वो हम डिराइव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड हियर, कि हमने ये कहा था कि हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन इज वेयर Y इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G. अब हमारे पास Y जो है दैट इज द एक्चुअल एक्सपेंडिचर, C प्लस I प्लस G जो है हमारी प्लान्ड एक्सपेंडिचर है. अब अगर हम इसी इक्वेशन को चेंजेस की शक्ल में लिखें तो देन चेंज इन Y इज इक्वल टू चेंज इन C प्लस चेंज इन I प्लस चेंज इन G. यानी कि हमारा जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, जब उसके पास हमारे पास तीन कंपोनेंट है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट्स एंड द गवर्नमेंट स्पेंडिंग. तो अगर हमारी Y चेंज होती है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर चेंज होता है, तो वो हो सकता है ड्यू टू द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ड्यू टू द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड ड्यू टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. तो उसी इक्विलिब्रियम कंडीशन को जब हम चेंजेस की शक्ल में लिखते हैं देन वी हैव दिस सेकंड इक्वेशन हियर, चेंज इन Y इज इक्वल टू चेंज इन C प्लस चेंज इन I प्लस चेंज इन G, एंड दैट इज इन टर्म्स ऑफ चेंजेस. And that is equal to change in C plus change in G. Why? Because हमने I को exogenous लिया, I is equal to I bar. Therefore, now we have change in Y is equal to MPC, marginal propensity to consume, into change in Y plus change in G. अब ये हम क्यों कह रहे हैं कि हमारा जो है change in C जो है that is equal to marginal propensity to consume into change in Y. जब हमने एक्सोजेनस लिया G को भी एट G बार, तो उस सूरत हाल में हमने ये देखा था कि स्लोप ऑफ आवर प्लान्ड एक्सपेंडिचर वाज इक्वल टू द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. दैट वाज ओनली रिफ्लेक्टिंग द चेंजेस इन कंजम्पशन ड्यू टू द चेंज इन इनकम. देयरफॉर अगर हम चेंज देखना चाहें कंजम्पशन में तो वी कैन सिंपली से कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम
times change in Y is the change in C. Therefore, we have replaced that change in C with this particular expression on this slide here. So here we have MPC into change in Y plus change in G, because change in C is equal to marginal propensity to consume times the change in Y. If you collect the terms with the change in Y, then if we put the change in Y terms on the left hand side of the equation, we have 1 minus the marginal propensity to consume times change in Y is equal to change in G. یعنی کہ ہمارے پاس change in G جو ہے that is equal to 1 minus MPC times change in Y. We can also rewrite this and we can say finally کہ change in Y is equal to 1 over 1 minus MPC times change in G. تو اس particular expression میں جب ہم کہتے ہیں change in Y is equal to 1 over 1 minus MPC times change in G, تو what are we saying کہ ہماری انکم کتنی چینج ہوگی by changing G is 1 over 1 minus MPC time change in G. اور یہ 1 over 1 minus MPC is basically the government purchases multiplier. کہ گورنمنٹ کی پرچیزز اگر 1 روپی سے بڑھتی ہیں تو ہماری انکم جو ہے وہ کتنے سے بڑھتی ہے, that is given by the government purchases multiplier. So let's make an assumption and assume our marginal propensity to consume is equal to 0.8 as we have done on this particular slide. Okay, let's assume that MPC is equal to 0.8, then change in Y will be equal to 1 over 1 minus MPC times change in G, which is equal to 1 over 1 minus 0.8 times change in G is equal to 1 over 0.2, which is 5 times change in G. That increase in G کہ گورنمنٹ ایکسپینڈیچر اگر ہمارا 1 روپے سے بڑھتا ہے تو ہماری انکم میں جو انکریز ہوتی ہے that is equal to 5. What is the mechanism behind this? کہ میکنزم یہ ہے کہ ہمارے پاس جب گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر 1 روپی سے بڑھتا ہے تو امیڈیٹلی فرسٹ فیز میں ہماری Y جو ہے that will increase by exactly equal to 1. لیکن انکریز ان Y کی وجہ سے ہماری کنزمپشن بھی بڑھے گی. نیکسٹ سائیکل میں کنزمپشن ول انکریز بائی مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم ٹائمز دی چینج ان Y. دین مزید اس کی وجہ سے ہماری Y بڑھے گی اینڈ تھرڈ فیز میں ہماری جو ٹوٹل انکم ہے وہ بڑھے گی بائی MPC times change in Y. So that we have summarized on this particular slide here. کہ initially the increase in G causes an equal increase in Y, which is change in Y is equal to change in G. But when Y increases, then it will also lead to an increase in consumption. And then a further increase in Y, which will lead to a further increase in consumption and further increase in income, and this cycle will go on. And ultimately ہمارے پاس سینیریو یہ ہوگا کہ ہمارے پاس گورنمنٹ ایکسپینڈیچر تو 1 روپی سے بڑھا لیکن اس کے جواب میں ہمارے پاس انکم جو ہے تھرو دس کنزمپشن سائیکل اینڈ دی ملٹیپلائر افیکٹ وہ بڑھ گیا بائی 5. اور اسی چیز کو جب ہم گرافیکلی بھی ہم نے دیکھا تھا تو گرافیکلی بھی یہی تھا کہ ہمارا کرو جو ہے چینج ان جی کی وجہ سے شفٹ کیا تھا بائی ا اسمالر ڈسٹینس, لیکن Y جو تھی ہماری وہ شفٹ کی تھی انکریز کی تھی بائی ا لارجر ڈفرنس. یہ تو تھا ہماری ون سائڈ آف دی فزیکل میئر وچ از انکریز ان G. دیر از اندر سائڈ آف دی فزیکل میئر اینڈ دیٹ از دی ٹیکسز. کہ اگر اب ہم دیکھنا چاہیں کہ گورنمنٹ اگر ٹیکس بڑھاتی ہے تو اس کا افیکٹ کیا ہوگا, تو لیٹس اینالائز دیٹ ود دی ہیلپ آف دس پرٹیکولر گراف ہیئر. اور اس گراف میں وی آر لوکنگ ایٹ دی انکریز ان ٹیکسز. بفور وی لک ایٹ دی گراف, now let's look at the role of the taxes. Taxes جو ہیں کلیکٹ کرتے ہیں revenues for the government, لیکن اکانومی میں اس کا امپیکٹ کیا ہے. If you go back to our previous equation, planned expenditure کی, جس میں ہم نے consumption لکھا as one of the component, اور پھر ہم نے consumption function کو define کیا اور ہم نے یہ کہا کہ ہمارا consumption جو ہے that is a function of disposable income, اور disposable income جو ہے that is income minus the taxes. So taxes جو ہے they enter into the consumption function negatively. اس لیے
टैक्सेस के बढ़ने से हमारी कंजम्पशन जो है वो कम होगी बेस्ड ऑन आवर मॉडल. अब ग्राफिकली अगर हम देखें, सो वी हैव हियर ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव टेकन y and on the y-axis we have taken the planned expenditure. 45-degree line where E is equal to y is the equilibrium condition. Suppose our original planned expenditure is E is equal to C1 plus I plus G. अब टैक्सेस बढ़ गए. टैक्सेस के बढ़ने की वजह से हमारा planned expenditure का curve has shifted downward, which is at a level of E is equal to C2 plus I plus G. So initially the tax will reduce the consumption and therefore the expenditure. और change in C जैसा कि मैंने पहले कहा now will be a negative number and that is minus marginal propensity to consume time change in T. और ये C के कम होने की वजह से हमारा कंजम्पशन planned expenditure कर्व जो है वो शिफ्ट किया डाउनवर्ड, क्योंकि टैक्सेस का रोल हमारे मॉडल में इज कमिंग थ्रू द कंजम्पशन ओनली, जबकि जी डायरेक्टली शामिल था तो वी हैव शिफ्टेड द प्लान्ड एक्सपेंडिचर बाय एग्जैक्टली इक्वल टू जी. लेकिन टी जो है दैट विल बी अफेक्टिंग आवर प्लान्ड एक्सपेंडिचर, लेकिन थ्रू क्या होगा, कंजम्पशन. तो देयरफॉर कंजम्पशन कितनी चेंज होगी, चेंज इन सी इज इक्वल टू माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम टाइम द चेंज इन टैक्सेस. सो यहां पे क्या होगा, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट पहले हमारा इक्विलिब्रियम था एट अ लेवल ऑफ E1 इज इक्वल टू Y1. अब हमारी इनकम भी कम हो गई. जब कंजम्पशन कम हुई तो हमारी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम भी शिफ्ट किया फ्रॉम Y1 टू Y2. न्यू इक्विलिब्रियम इज वेयर E2 इज इक्वल टू Y2. विद द चेंज, विद द इंक्रीज इन टैक्सेस एंड अ डिक्लाइन इन द कंजम्पशन, व्हाट इज द सिनेरियो, एट Y1 there is now an unplanned inventory build up. कि लोगों के पास जो है कंजम्पशन कम हुई, इसलिए प्रोड्यूसर्स के पास एक अनप्लान्ड इन्वेंट्री जो है वो पाइल अप हो गई. इसलिए वो क्या करेंगे, अपनी फर्दर प्रोडक्शन को कट डाउन कर देंगे. और फर्दर प्रोडक्शन जब कट डाउन होती है तो हमारी इनकम जो है दैट फॉल्स फ्रॉम Y1 टूवर्ड्स Y2. तो इसको हम अगर एनालाइज करना चाहते हैं तो वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द मैकेनिज्म कि जब हमारी कंजम्पशन अगर देखें शिफ्ट किया प्लान्ड एक्सपेंडिचर को बाय अ लेसर अमाउंट, लेकिन हमारी इनकम जो कम हुई है दैट इज बाय अ बिगर अमाउंट. तो अब हम इसको अगर उसी इक्वेशन की शक्ल में देखना चाहें तो वी कैन एनालाइज दिस सिनेरियो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड हियर. आवर इक्विलिब्रियम कंडीशन इज वेयर y इज इक्वल टू c प्लस i प्लस g. और अगर हम चेंज फॉर्म में लिखें then we have change in y is equal to change in c plus change in i plus change in g. अब इसमें हमारे पास I and G, investments and the government expenditure is exogenous, therefore our change in y is equal to change in c. और change in c जो है that is coming through the multiplier effect, marginal propensity to consume times the disposable income, which is change in y minus the change in t. हमारे टैक्सेस की चेंज जो है दैट इज शोन राइट ओवर देयर इन दिस थर्ड इक्वेशन. इफ वी ट्राई टू सॉल्व फॉर चेंज इन y, देन वी हैव 1 माइनस MPC into change in y is equal to minus MPC into change in t. And finally, if we want to look at the overall impact on income, then our change in y is equal to minus MPC over 1 minus MPC times change in T. यानी जो हमारा टैक्सेस का मल्टीप्लायर इफेक्ट है दैट इज नेगेटिव, कि जब हमारे टैक्सेस बढ़ते हैं डिस्पोजेबल इनकम के कम होने की वजह से कंजम्पशन कम हो जाती है, और जो हमारा मल्टीप्लायर है टैक्स मल्टीप्लायर दैट इज इक्वल टू माइनस MPC ओवर 1 माइनस MPC विच इज डिफरेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर. इफ ट्राई टू रिकॉल, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर को हमने लिखा था 1 ओवर 1 माइनस MPC और दैट वाज अ पॉजिटिव नंबर, कि अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ता था तो इनकम भी बढ़ती थी. लेकिन टैक्सेस जो है दैट इज अ नेगेटिव नंबर और उसका एक्सप्रेशन है माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम
over 1 minus marginal propensity to consume with a negative number. یعنی کہ ٹیکسز کے بڑھنے سے ہماری انکم کم ہوتی ہے, بٹ انکم جو ہے وہ ٹیکسز کے بڑھنے سے زیادہ کمی واقع ہوتی ہے انکم میں. تو وی ہیو شون دیٹ رائٹ اوور ہیئر. دی ٹیکس ملٹیپلائر, دی چینج ان انکم ریزلٹنگ فرام a dollar increase in T is equal to change in Y over change in T. T is taxes. And that is equal to minus MPC over 1 minus the MPC. If we assume that our marginal propensity to consume is equal to 0.8, the same number which we assumed when we were calculating the government purchases multiplier, then the tax multiplier will be equal to change in Y over change in T is equal to minus 0.8 over 1 minus 0.8, which is 0.8 over 0.2 is equal to minus 4. اب یہ جو ہے ہمارا minus 4, یہ کیا کہتا ہے کہ اگر ہمارا ٹیکسز جو ہے گورنمنٹ 1 روپی یا $1 سے بڑھائے گی تو ہماری انکم جو ہے وہ 4 روپی یا $4 سے کم ہو جائے گی, کہ دیر از اے ملٹیپلائر افیکٹ. لیکن اگر ہم گورنمنٹ کے پرچیزز ملٹیپلائر کو کمپیئر کریں ود دی ٹیکسز ملٹیپلائر, اسیومنگ کہ ہمارے پاس مارجنل پروپنسٹی ٹو کنزیوم از دی سیم, اور وہ ہم نے کہا مارجنل پروپنسٹی ٹو کنزیوم از اکول ٹو 0.8. تو اس سیناریو میں جب ہم نے کیلکولیٹ کیا گورنمنٹ کا پرچیزز ملٹیپلائر دیٹ واز اکول ٹو 5, لیکن جب ہم نے ٹیکسز ملٹیپلائر کو کیلکولیٹ کیا تو دیٹ از اکول ٹو -4. فرسٹ آف آل, a tax multiplier is negative because a tax hike reduces the consumer spending, which reduces the income. It is greater than 1 in absolute value. A change in taxes has a multiplier effect on income. But thirdly, it is smaller than the government spending multiplier. The consumers, they save a fraction which is 1 minus marginal propensity to consume of a tax out. So the initial boost in spending from a tax cut is smaller than from an equal increase in G. کہ جب ہم نے بات کی تھی کہ ہماری گورنمنٹ ایکسپینڈیچر بڑھتے ہیں تو چینج ان جی فار دی فرسٹ ٹائم واز ایگزیکٹلی ایکول ٹو چینج ان وائی. لیکن جب ہمارے ٹیکسز جو ہیں وہ بڑھتے ہیں تو ہماری چینج ان وائی از ناٹ ایکول ٹو چینج ان ٹی, رادر چینج ان وائی از ایکول ٹو چینج ان سی, اور چینج ان سی جو ہے دیٹ از ایکول ٹو وائی مائنس ٹی, اور وہ ہے ہمارے پاس ایم پی سی marginal propensity to consume. اگر 0.8 ہے تو ہمارے 0.8 times the increase in taxes is reflected as a change in Y. تو یہ ہمارا تھا ٹیکس ملٹیپلائر. اب ہم بات کرنا چاہتے ہیں آئی ایس کرو. بیسیکلی ہمارا آئی ایس کرو از نون ایز دی انویسٹمنٹ سیونگ کرو, اور جیسے کہ میں نے آج کے لیکچر کے شروع میں بھی کہا کہ ہمارا آج کا آبجیکٹو کیا ہے, یا اس ٹاپک میں ہم کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ایگریگیٹ ڈیمانڈ کے ڈٹرمیننٹس کیا ہیں. اور اس ایگریگیٹ ڈیمانڈ کے ڈٹرمیننٹس میں ہم نے بات کی ایک آئی ایس کرو جو کہ انویسٹمنٹ سیونگ کرو ہے, جو ایکسپلین کرتا ہے ایکولیبریم ان دا گڈس مارکیٹ, اور دوسرا ہے ہمارے پاس ایل ایم کرو وچ از لیکوڈیٹی منی کرو, جو ایکسپلین کرتا ہے ایکولیبریم ان دی گڈس مارکیٹ. تو اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ انویسٹمنٹ سیونگ کرو جو ہے یہ کس طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں ود دس پرٹیکولر ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ جو ہے آئی از اکول ٹو آئی بار, جن کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایگزوجینسلی ڈیٹرمنڈ ہے ایٹ اے لیول آف آئی بار. لیکن اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا جب ہم بات کر رہے تھے کلاسیکل ماڈل کی, اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے لیول آف انویسٹمنٹ کو, کہ ریئل انٹرسٹ ریٹ از بیسیکلی ریٹرن فار دی انویسٹر. تو اگر ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو انویسٹر دے وڈ لائک ٹو انویسٹ مور. اب لیکن دوسری طرف ہم نے یہی کہا تھا کہ یہ ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہے از آلسو کاسٹ آف کیپٹل, اور اگر انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے کاسٹ آف کیپٹل کے بڑھنے سے پروڈیوسر جو ہیں دے وڈ لائک ٹو انویسٹ لیس. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی آئی ایس کرو, graph of all combination of the real interest rate and Y that results in goods market equilibrium. That is, the goods market is in equilibrium where our actual expenditure or output is equal to the planned expenditure.
The equation for the IS curve is y is equal to C as a function of disposable income plus I as a function of interest rate plus G which is fixed and exogenous. तो इस particular equation में हमने क्या किया, we are talking about the total y planned expenditure. It has three components. Again we are talking about a closed economy जिसमें हमारे पास imports and exports नहीं है. तो पहला हमारा जो कंपोनेंट है प्लान्ड एक्सपेंडिचर का वो कंजम्पशन है और वो फंक्शन है डिस्पोजेबल इनकम का. दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है दैट इज ऑफ द इन्वेस्टमेंट, और जो हमारा इन्वेस्टमेंट है दैट बेसिकली इज अ फंक्शन ऑफ द रियल इंटरेस्ट रेट. और थर्ड कंपोनेंट है जी विच इज एक्सोजेनसली गिवन. अब इसी चीज को हम ग्राफिकली देखते हैं. इस ग्राफ में वी आर ट्राइंग टू डिराइव द आईएस कर्व. जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट बढ़ती है द फर्स्ट ग्राफ में, और वो इन्वेस्टमेंट इज रिस्पॉन्डिंग टू द चेंज इन द इंटरेस्ट रेट, और हमने ये कहा था कि हमारे पास इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट्स दे आर नेगेटिवली रिलेटेड. जब हमारा इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाती है. इसीलिए अपर पैनल में जो हमारा ग्राफ है उसमें हमारा प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो है ई सी प्लस आई ऑफ आर वन प्लस जी से बढ़ के ई सी प्लस आई ऑफ आर टू प्लस जी पे शिफ्ट कर जाता है. And that is reflecting the total change in investment. लोअर पैनल में हम ये देख रहे हैं कि पहले हमारा इक्विलिब्रियम था at a point y1 with interest rate at r1 and a level of investment I as a function of r1 which was lower. जब हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया r2 पे चला गया तो उससे क्या हुआ कि हमारा इक्विलिब्रियम लेवल जो है that is shifted from y1 to y2. तो लोअर पैनल में we are deriving the इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व जो आपको गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम दे रहा है एट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट पे. R1 के ऊपर इक्विलिब्रियम लेवल Y1, R2 के ऊपर इक्विलिब्रियम लेवल Y2. तो ये तो था हमारा इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व और दी IS कर्व. IS कर्व जो है बेसिकली एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन द रियल इंटरेस्ट रेट एंड द आउटपुट लेवल एंड दैट इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट. अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसी डिस्कशन को जो है कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल आल्सो लुक एट द आईएस कर्व इन द मनी मार्केट एंड देन वी विल मूव टू द एलएम कर्व और द लिक्विडिटी मनी कर्व. इससे पहले कि हम आज का लेक्चर जो है वो कंक्लूड करें, मैं चाहूंगी कि हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लें कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया. तो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने केन्सियन मॉडल की बात की जिसमें केन्स ये कहता है कि लो लेवल ऑफ द इकोनॉमी or the performance of the economy is not only due to the supply side. अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड का लेवल लो हो तब भी हमारी इकोनॉमी में प्रोग्रेस एंड ग्रोथ जो है दैट इज स्टक टू द लोअर लेवल्स. इसलिए हमने शुरू किया एनालिसिस ऑफ द एग्रीगेट डिमांड एंड वी वर ट्राइंग टू लुक बिहाइंड द सीन कि एग्रीगेट डिमांड जो है उसको क्या क्या डिटरमिन करता है. तो इस सिलसिले में हमने ये कहा कि पहला जो है हमारा दैट इज द आईएस कर्व विच इज इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व. लेकिन इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व को डिराइव करने के से पहले हमने जो है वो केन्सियन क्रॉस की बात की और जिसमें हमने ये बात की कि केन्स के मुताबिक इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट वो होगा जहां पे हमारी एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द प्लान्ड एक्सपेंडिचर. एंड देन वी सेड कि हमारा प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो है इट हैज थ्री कंपोनेंट्स क्योंकि हमने अज्यूम किया कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्लोज्ड इकोनॉमी जिसमें हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स नहीं है. तो हमारे पास इस प्लान्ड एक्सपेंडिचर में पहला कंपोनेंट था कंजम्पशन का जो फंक्शन है डिस्पोजेबल इनकम का, दूसरा कंपोनेंट था इन्वेस्टमेंट और तीसरा था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. और हमने ये अज्यूम किया कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट इज एक्सोजेनसली डिटरमिन्ड. और फिर हमने ये देखा कि चेंज इन जी की वजह से अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तो हमारी इनकम भी बढ़ जाती है. और ये भी हमने साथ साथ एनालाइज किया कि हमारी जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ी थी वो कम थी लेकिन हमारी इनकम जो बढ़ी थी वो ज्यादा थी. और उसमें हमने ये देखा कि बिहाइंड द सीन वी आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट परचेजेस मल्टीप्लायर कि फर्स्ट राउंड में हमारी चेंज इन जी इज एग्जैक्टली इक्वल टू द चेंज इन वाई. लेकिन सेकेंड राउंड में क्या है कि हमारी कंजम्पशन भी वाई या इनकम के बढ़ने से बढ़ती है बाय एन अमाउंट विच इज द
marginal propensity to consume. Overall जब हम गवर्नमेंट परचेजेस मल्टीप्लायर की बात करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 1/1 माइनस दी एमपीसी, और हमने अज्यूम किया कि अगर हमारे पास एमपीसी इज इक्वल टू 0.8 तो हमारे पास गवर्नमेंट परचेजेस मल्टीप्लायर जो है दैट वाज इक्वल टू 5. फिर हमने टैक्स मल्टीप्लायर की बात की एंड वी सेड कि टैक्स का मल्टीप्लायर वाज नेगेटिव बट इट वाज स्मॉलर देन द गवर्नमेंट परचेजेस मल्टीप्लायर. एंड व्हाई वाज दैट सो? क्योंकि हमारे पास टैक्सेस जो है थ्रू कंजम्पशन प्लान्ड एक्सपेंडिचर को इफेक्ट करते हैं. इसलिए जो फर्स्ट टाइम चेंज है दैट इज नॉट इक्वल टू चेंज इन टी इज नॉट इक्वल टू चेंज इन वाई, रादर चेंज इन वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी इनटू चेंज इन वाई. इसके बाद हमने आईएस कर्व को ड्रा करने की कोशिश की और जिसमें हमने देखा कि रियल इंटरेस्ट रेट अगर चेंज होंगे तो हमारे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट उसके साथ चेंज होती चली जाएगी. तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. आपसे मुलाकात होगी. अब डॉक्टर तलत को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.